Not surprised. I mean, that's how the tournament has gone for both teams. So, but no, what are you saying, sir? We played 2007 World Cup, T20 World Cup final. Asia Cup final. I don't know. What can I say about that? It's just not happened. Probably, maybe this tournament. Rohit, a lot of talk about the Pakistani basemen, Shaheen, Naseem and Haris Rauf. How do you rate the Indian trio of Shami, Siraj and Bumrah, and how is Bumrah working up? Is there workload management for him and with the World Cup? Yeah, look, all six bowlers are great bowlers without a doubt, and they've proven in the world cricket right now how good they are. Speaking of, Shami, Siraj, Bumrah, especially Bumrah, who's coming off from an injury after such a long time. He played in Ireland, looked good, and the small little camp we had in Bangalore, he looked good as well. And yeah, he's looking in good spirit. That is a good sign for us. And so is Shami and Siraj. They've been doing the job for us in the past few years now, and I hope that they continue to do that for us. To have all three quicks in good shape, good frame of mind is always a good sign. It's going to be a very positive sign for us. So hopefully they can keep themselves fresh throughout this next 2 months. In an ideal world, you want it to be the best rehearsal of the World Cup in so many ways. Now that it's not the case, are you taking this as the final fitness test for the World Cup, the next fortnight, or are you treating it as the last bit of the preparation? See, by no means this is a fitness test. This tournament is a fitness test or any other thing. This is a tournament, Asia Cup, played between top 6 Asian teams. So it's a very big tournament, without a doubt. In the past, it has had so much history. So yeah, I mean, the fitness test and fitness camp and all that was done in Bangalore. Now we have to move ahead and get our game face on and try and see what we can achieve in this tournament. Well, after almost a year, you have a full complement of players to pick from, apart from Rishabh and hopefully joining you next week. So, given how close this is to the World Cup, I'm sure you have your plans in place in terms of what your middle order especially is going to look like. How do you look at the fact that now suddenly you have these many options and this little time to make a decision? Yeah, I mean, I would probably be in this kind of headache rather than having no headache. It's always nice to have good pool of players to choose from. It's always nice within the team environment as well to have such kind of competition as well, and so many players being available. And I know that the fact that all these guys when available and at their best, it's going to be quite a challenging task for us to make the playing 11, and that is always a good thing to have in the team environment when we have such kind of competition headaches around. So I will hope that all these players, all the 15, 18 that we have now here, stay fresh, stay fit throughout the tournament, throughout the next 2 months. But speaking of just the Asia Cup right now, I want to make sure that we have no injury concerns, and we shouldn't have any injury concerns. That'll be a good sign for us to move forward. Rohit, you may have seen or at least known about the game that happened in this ground yesterday between Sri Lanka and Bangladesh. It was a slow and sluggish track that was there. How does that affect your batting approach? Because you often said that you want to play very aggressive cricket. How does that affect your batting approach? And will you also be tempted to play 3 spinners, which is a rarity? Yeah, look, I mean, all sorts of combinations are available. Looking at how the game was played yesterday, we saw a bit of swing, bit of spin. We saw everything, and that is always challenging. It's always going to challenge the batters. Luckily, we've got experience
in our batting lineup, you know, and I will let them that experience come in play and play accordingly. Yes, I've said that we want to try and take the game on, but you know, it's important to read the situation, conditions as well, because you know it's not a T20 format; it's a 50-over format where you know you have to apply a little more than T20 cricket and apply for a little longer. So the whole idea of you know being aggressive and being an individual to allow them to play their game, yes, it's very much there, but at the same time, you know, we let the individuals take the decisions when they are in the middle, because quite a few of them, a lot of them actually are quite experienced and have played in these type of conditions. So they know exactly what sort of game plan, what sort of mindset they need to have when they're playing against a quality opposition. India Pakistan is very fishy when we back in days. Right now, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh seems to have taken over the Asia Cup. Right? And on the other hand, India Pakistan players seems to have very much respect and like there's a lot of appreciation between both the players as well. We just talk about that, how the rivalry is today these days. I didn't understand. So I just wanted to know like how is the rivalry between India and Pakistan players these days compared to the previous time? Because now Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan seems to be very clearly that India's Pakistan, and there's a lot of admiration between Indian and Pakistan players as well. Look, it's a tournament where 6 teams are competing, and all 6 teams are quite competitive. Anyone can beat anyone on any given day. You've got to be best on that given day. Rivalry is there for people to talk about, but for us, we don't want to look into all those kind of things. We want to see what, as Team India, we want to focus is on, you know, we have an opposition to play tomorrow, how we can come up against them, how we can perform, how we can get the things that we want to do right, and focus on those kind of things rather than looking at all sorts of other things, which eventually is not going to help you. What is going to help us is keep doing the right things on the field, keep making the right decision, and move forward as a team. We are here to you know, tick a lot of boxes when we finish the tournament. So hopefully we can achieve that and you know go into the next 1.5 months of the World Cup. रोहित भाई, जब एशिया कप पिछले साल दुबई में खेला गया था, इंडियन टीम बाहर हो गई थी, तो आपने यहाँ पे बोला था कि जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं तो हमारी टीम को कुछ इश्यूज हो रहे हैं. आज हम 365 दिन बाद एशिया कप के लिए खड़े हैं. आज क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम में जो इश्यूज थे जिसके बारे में आपने कहा था, हमने उनको सॉल्व कर लिया? देखिए, जब भी गलतियाँ होती है, जब भी कोई टूर्नामेंट अच्छा नहीं होता है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो पिछले 1 साल में हमने उन चीज़ों के बारे में काफ़ी बात किया है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो. हमने काफ़ी प्लेयर्स को खिलाया है उस दौरान. अभी हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 6 टीम खेलने वाले हैं. उसके बाद 10 टीम के साथ मुकाबला होगा वर्ल्ड कप में. तो जितने भी सारे इश्यूज़ या पॉइंट्स है जो हमें एड्रेस करने हैं, हम एड्रेस कर चुके हैं उस चीज़ को लेकर. अभी वक्त है कि हमें अच्छा क्रिकेट खेलना है और कैसे जीतना है, कैसे मैचेस में अच्छा करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें. इजाज़ पाकिस्तान गोल्ड टीवी से. आप हमेशा कहते हो कि तमाम 6 टीमें हमारे लिए ही बेस्ट टीम है जिनके खिलाफ खेलना है, लेकिन कल जिस टीम के साथ मैच है पाकिस्तान के साथ, वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम है. और पूरी दुनिया में क्योंकि फ्रेंड्स के लिए आप लोग खेलते हो कि शाहीन पहले ओवर में विकेट लेते हैं और बाबर ने भी नेपाल के खिलाफ 150 स्कोर किया है. तो स्पेसिफिक पाकिस्तानी टीम को आप कैसी शेप में देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी टीम है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर फॉर्मेट हो, कोई भी टीम ऐसे ही नंबर 1 नहीं बनती है. मेहनत होता है उसके पीछे, और आई एम श्योर कि यू नो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी मेहनत किया है इसके पीछे, और काफ़ी यूनिट जैसी टीम है. अच्छा क्रिकेट खेल रही है, तो हमारे लिए एक अच्छा चैलेंज होगा यू नो ऐसे टीम के सामने खेलना और ऐसे टीम के सामने परफॉर्मेंस करना. प्रिपेयर हमने अच्छा किया है. हमारे पास यहाँ आने से पहले कुछ दिन थे, कुछ टाइम था हमारे पास जिस पे हमने वर्क किया है, और होपफुली अभी आज का एक दिन है हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए. उसके बाद कल मैच है, तो
होपफुली जिन जिन चीज़ों के बारे में हमने बात किया है हम उस चीज़ों को अच्छे तरीके से कल कर पाए। रोहित कार्तिक बदल फ्रॉम समर टीवी पाकिस्तान। मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह शाहीन शाह पहले ओवर में डोमिनेट करते हैं और आपकी काफ़ी मुश्किल में आ चुके हैं शाहीन की अगली बॉल में स्विंग होती है, तो वेदर कंडीशन कितना असरअंदाज करेगी बॉलिंग पर, और खासतौर पर पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं नसीम है, हारिस है, शाहीन है, कितना आप उस पर वर्क कर रहे हैं इन तीनों को खेलने के लिए? देखिए नेट में हमारे पास तो शाहीन, नसीम और रौफ तो है नहीं, तो हमारे पास जो बॉलर्स हैं हम उसी को लेके प्रैक्टिस करते हैं। बट देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला था मैंने बताया कि काफ़ी क्वालिटी बॉलर्स हैं तीनों, और तीनों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ सालों से अभी साथ में मिलकर खेल रहे हैं। तो देखिए क्वालिटी बॉलर्स है, हमेशा से पाकिस्तान के पास क्वालिटी बॉलर्स हमेशा से आए हैं। तो उनकी क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ बॉल करते हैं, कहाँ बॉल नहीं करते, ये सब हमने देखा हुआ है। अब इतने साल से खेल रहे हैं तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को यूज़ करके उनके सामने खेलना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। रोहित, ढाई महीना बहुत एक्साइटिंग रहेगी क्योंकि 2 बड़े टूर्नामेंट, और सबसे अच्छी बात कि टॉस जीतो मैच जीतो वाला मामला नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखो क्रिकेट अच्छा खेलना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। आई डोंट थिंक कि टॉस जीतो मैच जीतो वाला सिचुएशन होगा। जैसे आपने कहा कि ये 2-2.5 महीने काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी चैलेंजेस होंगे, बट कोई भी टीम के लिए और ख़ास करके हमारे टीम के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमें छोटे छोटे गोल्स जो है वो रखने और सामने क्या है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो कल हमारे सामने पाकिस्तान का मैच है, तो हम फोकस करेंगे कि उस मैच को हम कैसे अच्छे तरीके से खेलें और उसके बाद आगे की सोचेंगे कि आगे क्या करना है। आई थिंक शॉर्ट टर्म गोल्स जो है आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आई थिंक टीम के लिए वर्क करता है। आप अपना फॉर्म कैसे देख रहे हैं? वेस्ट इंडीज में अच्छा रहा आपका फॉर्मेट, अलग था लेकिन सेंचुरी आई, अपने फॉर्म को कैसे देख रहे हैं? कुछ सोचा है कि मतलब कैसे लंबा लेके जाएंगे या ताबड़तोड़ चलेगा? नहीं, देखिए अभी मैंने जैसे एक्सपीरियंस की बात की कि इतने साल खेला हूँ, तो वो एक्सपीरियंस को यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। टीम को क्या ज़रूरत है मेरे तरफ से, मुझे वो करने की ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। पिछले दो सालों में मैंने अलग तरीके का क्रिकेट खेला है, काफ़ी मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके खेला हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बैलेंस लाना है, रिस्क लेना है, कब लेना है, रिस्क नहीं लेना है। इसी मैं समझता हूँ कि एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीम के लिए। लंबा बैटिंग करना, एक अच्छे सिचुएशन में लाके टीम को रखना। तो आई थिंक ये इतने साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो इतना साल क्रिकेट खेला है, वो एक्सपीरियंस को यूज़ करने की कोशिश करूँगा। और देखिए टीम को अच्छे सिचुएशन में लाके रखना वो हमारा काम है। हम कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मौका मिले, जब भी एक अच्छे रिदम में मैं आऊँ, तो इतनी आसानी से मैं छोड़ ना दूँ, क्योंकि पिछले लास्ट 1 या 1.5 साल में मैंने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। मैं थोड़ा रिस्क लेके ज़्यादा खेल रहा था, बट कहीं ना कहीं वो गेम में मुझे अपने गेम में बैलेंस लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करूँगा उस चीज़ के बारे में।